देश भर में अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों से उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को नंबर 1 का खिताब मिला। हर कर्मचारी और हर अधिकारी ने बड़े जज्बे से इस कवायद में अपना योगदान दिया। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया, बहुमान किया गया और सभी ने यह कामना की कि जल्द ही यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने। सभी ने यही मंगल कामना की कि ये खुशी भी जल्द से जल्द मिले। इस आयोजन में किसने क्या कहा और क्या कामना की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। खुशी के ये नज़ारे आप देख रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर में यह आयोजन हो रहा है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नंबर 1 बनने पर जिस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों ने जिस जज्बे से काम किया, उस काम के परिणाम स्वरूप उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट नंबर 1 बना पूरे देश भर में और यही कवायद आगे भी जारी रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह एयरपोर्ट जल्द ही बन सकेगा। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक अरविंद जी सिंघल, अध्यक्ष कोमल जी कोठारी द्वारा एयरपोर्ट की डायरेक्टर नंदिता जी भट्ट का एवं उनकी टीम का स्वागत अभिनंदन किया गया। जिलों की नगरी उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट नंबर 1 आया है और खुशी इतनी है कि सब आह्लादित हैं इस खुशी में और यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और काफ़ी सारी सुविधाएं टूरिस्ट आए यहाँ पे उनको मिले। एयरपोर्ट से डायरेक्टर हैं नंदिता जी, काफ़ी आप एक खुशकिस्मत हैं कि जिलों की नगरी उदयपुर महाराणा प्रताप की नगरी है ये। जी बताएं कितनी खुशी हो रही है और क्या कामना करते हैं ईश्वर से कि क्या ये और आगे बढ़े। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मेरे पास आज शब्द नहीं है ये खुशी बयान करने के लिए जी, और बढ़ोतरी के लिए हम सब टीम मिलके आगे बढ़ते रहें। और जैसे कि आपने अभी कहा कि हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले तो हम उम्मीद करते हैं हमारी ये इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। जी आप बताएं क्या कहना है आपका। नहीं, चेंबर का जहाँ तक सवाल है, हम लोग हमारी पूरी चेष्टा कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे बात करने की ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और उदयपुर डेफिनेटली आगे चल के बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्थल बनेगा। इसलिए एयरपोर्ट की सुविधाएं, एयरपोर्ट की बढ़ाना और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत आप बताएं। जिस तरह से नंदिता जी ने एयरपोर्ट उदयपुर के लिए हमारे बहुत सुंदर एयरपोर्ट दिया, मुझे सबसे गुजारिश है कि हमारी सिटी को भी उसी तरह से सुंदर बनाए। ये सबसे बड़ी बात है। एयरपोर्ट तो हो गया लेकिन देखिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए और इसको चालू कराने के लिए नंदिता जी एक जिस प्रारूप में आज एयरपोर्ट है उसी में चालू करने को तैयार हुई, उसके लिए आपको धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार से 145 एकड़ ज़मीन इन्होंने मांगी है, शीघ्र मिले ताकि पूरा विस्तार से एयरपोर्ट आ पाए। बाकी को छोटी मोटी दुविधाएं ये अपने लेवल पे निपटा रही हैं और जिस तरह से इन्होंने कार्य किया जून से अभी तक में बहुत सराहनीय और ये नंबर 1 पोजीशन मिली है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई यूसीसीआई की तरफ से। और आज हम इस मौके पे आपके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज़ को करके हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे टूरिज्म से शिखा जी भी हैं, आप बताएं शिखा जी, जिस तरह से उदयपुर एक नंबर 1 पे जा रहा है, क्या कहना है आपका। मेरा ये कहना है कि आज तो खुशी का मौका है ही, बस बड़ी खुशी 2 कदम ही दूर है जब उदयपुर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल स्टेटस मिलेगा, उस दिन हमारे लिए ज़्यादा खुशी होगी और हम टूरिज्म को लगातार बढ़ाते ही जाएंगे। अब टूरिज्म का ग्राफ गिरने नहीं देंगे। और क्या क्या खुशी मिलने वाली है उदयपुर को। खुशियाँ तो गिने तो बहुत सारी अनेक हमारे पास आज भी है, हमको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। हर दिन हम एक खुशी को रिकॉग्नाइज करके सेलिब्रेट कर सकते हैं और आप देखिए अभी हर दिन चर्चे ही होंगे उदयपुर के। अंशु जी, जी बताएं क्या कहना है। वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुहिम को जैसे ही
हमारी प्रेसिडेंट ने छेड़ा, मुझे लगता है कि अनप्लान से नंदिता जी ने उसको हाथों हाथ लिया और फिर अरविंद भाई साहब, फिर बड़े भाई साहब सलित सिंघल भाई साहब ने हाईएस्ट अथॉरिटी तक उनको ले गए। इस दौरान 3-4 पायदान हमने पार किए। कार्गो ऑफिशियल से जो नेशनल लेवल से उनसे हमारी बातचीत हुई और उसी मीटिंग के दौरान उन्होंने डिक्लेयर किया कि उसकी एसओपी है जो पास हो गई है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर जो कार्गो है, डोमेस्टिक कार्गो, वो चालू हो जाएगा। ये एक कदम है जो एक्चुअली बेसिक लाइन है कि आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो आप। प्लस इन्होंने, नंदिता ने एक सुझाव दिया, वो ये था कि जैसे दुबई से चार्टर्ड प्लेन आया तो वो बेसिकली इंटरनेशनल ही हुआ और वो एक स्पेशल परमिशन से आया। तो कहते हैं जब तक इंटरनेशनल नहीं बन जाए तब तक इस फिल गैप से हम लोग काम कराएं, दैट वी कैन हैव चार्टर्ड फ्लाइट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू उदयपुर इन दिस फॉर्मेट और कैपेसिटी, सो दैट वी कैन हैव इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंडिंग एट उदयपुर डायरेक्टली। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। हमारे साथ में गोदा जी भी हैं। आप बताएं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक शुरुआत है जी। आज उदयपुर में एक अच्छा घटना हुई जिसमें एयरपोर्ट नंबर 1 आया पूरे इंडिया के अंदर। तो हमारे उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उसको सेलिब्रेट किया। इस तरह की और भी जो भी अच्छी बातें होंगी उदयपुर में, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे और एक इंकरेजमेंट मिलेगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उदयपुर में जो भी अच्छी बातें होंगी हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सेलिब्रेट करेगा और नंबर 1 हर डायरेक्शन में, हर जगह हम आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हेमंत जी, सब क्या कहना है आपका? सो यू कैन कंटिन्यू विद द बाइट्स। हाँ, ले लीजिए हेमंत जी का। जी। उदयपुर नंबर 1 अभी एयरपोर्ट है, सिटी भी था और जिलों की नगरी में टूरिस्ट का इसी तरीके से अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट टूरिज़्म में भी उदयपुर एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। जिस तरह से एयरपोर्ट नंबर 1 हुआ है, क्या और फैसिलिटी इसमें हो तो 4 चांद लग जाए, और क्या आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जी। तो मैं कमांडेंट CISF यहाँ पे एयरपोर्ट में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे कि उदयपुर एयरपोर्ट पे आपका एक्सपीरियंस आने जाने का और अच्छा हो और आप सेफ महसूस करें हमेशा उदयपुर से आने का। ये एयरपोर्ट की पूरी टीम है जो जिसके बलबूते पर उदयपुर को ये तवज्जो मिली, और जिस तरह से इनकी मेहनत और लगन से जो काम हो रहा है उदयपुर एयरपोर्ट पर, वाकई में तारीफ़े काबिल है। और जिलों की नगरी उदयपुर के वासिंदे ही नहीं अपितु यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट और हर यात्री इनका आभार व्यक्त करता है कि जो इन्होंने मेहनत करके और दिखाया है वो आखिर में रंग ला रहा है। ये और भी आगे भी भविष्य में काफ़ी ऊंचाइयां इस एयरपोर्ट को प्रदान करेगा। सभी की यही मंगल कामना है। आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद। जी। आज जो उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एयरपोर्ट, जो हमारा उदयपुर एयरपोर्ट पूरे भारत में नंबर 1 आया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अतिशीघ्र उदयपुर में चालू हो जाएगा। धन्यवाद। आई एम रमेश सिंघवी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं ख़ास तौर से मुझे उदयपुर एयरपोर्ट की 50 साल पुरानी तस्वीर भी याद है और अभी की तस्वीर भी याद है। जो तरक्की उदयपुर एयरपोर्ट ने करी है, अच्छे अच्छे एयरपोर्टों ने नहीं करी। और अब स्पेशली इतने प्राइस उदयपुर एयरपोर्ट को मिले हैं, बिजनेस एक्सपेंशन हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि और आगे तरक्की करेगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी चालू होगा। मैं सुभाष सिंघवी, UCCI एग्जीक्यूटिव मेंबर। नंदिता मैडम, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उदयपुर एयरपोर्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 आया है और आगे भी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बनेगा, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हितेश पटेल, मार्बल प्रोसेसर समिति जनरल सेक्रेटरी। उदयपुर एयरपोर्ट को नंबर 1 पोजीशन बनने पर बहुत हार्दिक बधाई और एयरपोर्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा सिटी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बताएं क्या कहना है आपका? उदयपुर के लिए गौरव की बात है कि आज ये एयरपोर्ट को नंबर 1 मिला है। तो हमारे उदयपुर शहर टूरिज़्म की दृष्टि से ऑलरेडी
नंबर 1 है और ये एयरपोर्ट की वजह से बेनिफिट मिला और चैम्बर ने उसको अप्रिशिएट किया। सभी मेंबर ये चाहते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील हो जाए। यही शुभकामनाएं। उदयपुर में के एयरपोर्ट को जो इंडिया में नंबर 1 डिक्लेयर किया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है शहर के लिए भी और एयरपोर्ट के लिए भी। और उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में पूरा अगर हम देखें तो उदयपुर एकमात्र ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन बोलते हैं। और लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जिस जगह आएँ वो जगह उनके लिए कन्वीनियंट हो, उनका आवागमन बहुत अच्छा हो। और इट इज़ सेड इन हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, कि यू नो द फर्स्ट इम्प्रेशन विच यू गेट फॉर एनी प्लेस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच यू पुट इन देयर। तो जो पहला कदम एयरपोर्ट में पड़ता है और वही अगर हिंदुस्तान का बेस्ट है तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदया ने जो कार्य किया है, उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से अपना सारा वर्चस्व पूरा इसमें दे दिया, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये अपने जो पायदान है 1 नंबर है उसको बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। Words. I'm usually a woman who talks a lot, and that comes typically to my agenda. But I think today I'm actually really short. It's a feeling that I really can't express, and I'm really proud to be standing here on the stage. But I'm not going to take the credit. Can I please request my team to stand up? It's because of these people that I'm standing here. Come on. Thank you so much. So I may be the face, as you always say, directors are the faces of each airport to present. But these are the people who take my every brink of mood, temperaments, anger to love, affection, and being a family. When I came here in June, it was right at the middle of COVID. So I was told, if you want to join, this is the last opportunity. Pack your bags, 20 kg, a flight with Indigo. And there I was with my daughter here at Udaipur. And I had such a lovely warm welcome with the team. And then they gave us 2 rooms and said, there you go for 14 days, shut and quarantine your Delhi people. So I had to do that. And the minute that quarantine got over and I walked to the airport, there was not even one instance that I felt I was at a different unknown place. I'm a daughter born to an aviation man, so airport has been my, not only a bread butter now, it's been my home, because my father has also been an airport director and last year retired from Ahmedabad. So it's a family business to me, as all my friends put down, though it's a government job. So that's how I've been here. And professionally, actually speaking, I'm an architect. I started with JJ's in Mumbai, and I post-graduated in landscape in SPA Delhi. And after that, I shifted to training. I also hold a designation from the ICAO, which is the UN body, and ACI, as the International Airport Professional. And then I came here to become the airport director after doing and training people in management. Coming to the words, we are really prestige and grateful to you to recognizing our efforts. It really means a lot to us. And it also motivates my team to know that they have to now keep on maintaining this. That's the most difficult part for them, and for me too. And I'm glad to tell you that when we run airports, please, it's not just the Airport Authority of India. We have all the stakeholders who have to be with us. So we have airlines, we have CIC who's seeing our security, and then we have our advertising agency, which Naveen is seeing. And when we talk of 33 parameters that we do, please remember, besides security, airlines, check-in, and the ambience, we also have a team which puts in a lot of effort to maintain the cleanliness. Can I expect those 3 gentlemen to stand, who are the supervisors with our tenure aviation, with Hansrajji, Kedar, and the most toughest part nowadays is with them, because we have to put in all the effort nowadays of not only cleaning the basic which is required, but even the biomedical waste which is walking in. And I think their duty has become triple the amount which is being running. So I'm really grateful to my whole team and them, and we have rested with the UCI Italian. But something, because we have people from the industry here, let's tell you that Udaipur Airport today is ready. We have almost about 11 bays for Code C aircraft. We can have night parking, and we've been really abundant to have a lot of charters which have been walking in with us nowadays. And you'll be surprised to know, though we may have just covered 50% of traffic from the normal situation, but this
February till 24th, we have done 68,000 passengers. And that's really amazing. And we had almost about, I think, 600 movements, if I'm not mistaken, Mark. About 600 movements and 68,000 passengers just from February 1st to 24th. So I think if Shikha is going to keep pushing the tourism, and we please have less of guidelines walking in, which we just had one today in Mumbai and Maharashtra and Kerala, and we have a couple of airlines from SpiceJet and Air India planning to start Mumbai is actually going to be giving us a little back foot on these things. But when we have all these states port, and I must say it's really lovely when I met Shikha here and we just clicked and created that bond, that she walks in with the state government officials sitting there and taking data, which is actually a huge amount of humongous work to do every day. But I think the team is doing commendable work, and they're part of those three parameters for us, because it's customer satisfaction and they walk out. Also, I'm going to just quickly brief, and if I miss out, so she'll tell me if I missed any point. We have a couple of tenders which we pulled up and we want people to participate. Our trolley management, which you can take, which we are hardly giving at any price. You can pick up that, keep few people to do the trolley management and pick your earning by putting the advertisements on that. So we want people to come up front to join hands with us on that. And then we have master concessionaire, which is a very huge thing coming up with the Udaipur airport, and whoever qualifies here should apply, in which the master concessionaire is going to be for retail and F&B. And you're going to get the best of the brands, and we're going to really try and pull with whoever is the agency who gets the tender, is to get the best of the brands here in Udaipur. Because what I see, it's not the mall city as we call or have too many brands, but airport is one place people have the leisure to shop, and we would like those brands to walk into us. Then we have a meet and a greet service which is going to start very soon. We've awarded to a party. This would be very helpful for tourism, and especially the hoteliers who come in, where they will have their guests on a very minimalistic price to use the portal service and have somebody to meet and greet them and take them a price to work through. Talking of international, I always say fingers is crossed, and as they say in a very old saying, कि जब पूरी कायनात आपके साथ होती है तो आपकी इच्छाएं और ड्रीम पूरे होते हैं. So when we have so many of us putting that energy together, we should really be achieving that fruitful. Though I would not miss out to tell you that it may not be an A-class absolute facilities when the international will begin now, if we get through that. But we will start with that minimalistic bare minimum requirement that we can accommodate in this very small building. So our building was designed actually for almost just about 600 passengers at a peak moment at a given time. And I would not be missing out if any airline person will tell actually how many flights they're actually operating, and it's so much beyond that 600 number we do at a given moment. And that's really the kind of growth that Udaipur has. If you talk on a personal opinion, as a professional in aviation, I actually believe Udaipur has potentials to have air shows. They have actually the potential to be having water aerodromes, and it is your industry which can push that. And coming to cargo, yes, congratulations to all of you in the effort that's gone. Our vetting has been cleared by BCAS, and we're looking forward for the approval walking in us by Monday or Tuesday. So the airlines are here. Whoever is keen, I think they will have their forums to registered agents or whatever the process is. Please walk. You actually have the 4 gentlemen and 1 lady who's here who would be doing that. Another name I would not miss out, who gives the perfect, VIP treatment when it comes to the customers which are coming from exclusive charter is coming. Thank you so much to the gentleman, Gagan, you can stand there, which really counts for those special customers who come, and he's the one who's taking care for the ground handling for them when it comes exclusive. Another thing that we did recently, just about a week back, of course we cannot disclose the name of the passengers and group. We had a flight which landed from Dubai, a charter directly to Dubai. Now this was done by them on a special permission with MHA and DGCA, and we had a special team of customs and immigration which came to cater specifically to that charter flight. So it's not that we can't have this way and utilize it when it comes to tourism charters till we are not declared international.
I think that's another aspect that you all should locate to apply for approvals with DGCA and MHA and hope that we get more flights. So I think I should not come much in between probably the dinner which they are treating us, and I'm looking forward for that. We're all straight for the work. So once again, thank you so much for recognizing our efforts and feeling our prestige and making us so proud. Namaskar. Thank you so much. Our company is maintaining gardens in airport. So she wanted to improve them, see how they can be better organized or whatever. And I think my sister-in-law had a meeting with you at the airport. So that's the feeling behind her thoughts and the process and how things can improve and further develop. I certainly welcome you again and thank you very much and congratulate you again once again. When we realized that there is an excellence achievement by our airport, so I requested her to kindly give us an opportunity at UCCI, and she was very kind enough to agree. I also welcome the airline managers, madams Sharma ji, Sneha Sharma ji, Charu ji, Vistara airport manager, I think Indigo airport manager is yet to arrive, and SpiceJet and CSF, Deputy Commandant Vipulji and Atulji, Assistant Commandant, AGM Jha, our past presidents, UCCI executive members, parameters, 33 parameters of excellence service. The toughest thing at the airport, which we all know, is to handle the traffic, to see the safety, but achieving that very happily and also with the standard of amongst the top. This 4.84 is a very phenomenal score. Madam, and I think in a short span of her tenure at Udaipur, she has really went the way to reach to this position. Including our tourism subcommittee meeting, which was hosted at Fateh Prakash. We had a meeting with them. We also had opportunity of first interaction with Mamta ji, and I realized that here is a personal presentation through the Minister. And I am glad to share with you that presentation which was submitted to Civil Aviation, Ministry of Commerce and other departments has moved information to judge whether this airport can be declared international. That has to be a decision of the cabinet, which will make sure that some representation go to the Civil Aviation Minister to make this airport international. Why we need that facility or business. People have to travel. Circuits and itineraries don't start from Udaipur. A proper proposal has been made and she will declare whatever has been done. It's not that Udaipur airport has not been developed in her tenure. A new airport has been made with parking facility. The aircrafts can come and stay overnight. That will again give boost to the economy because the flights will originate from Udaipur. You get a full flight load. I remember the flight number 123 and 12 Air India flights, which used to be 471, 472 से पहले सर 123 था, 121, 123 मैडम चालू कैब से and वो चलती थी बॉम्बे. Increasing the movement of travelers in Udaipur, benefiting both tourism and industry. What goes behind these great movements, I think, are great team efforts, a meticulous and constant follow and encouragement by an efficient captain. So I would say also this that during these times when COVID hit the world, I got associated with Nandita ji and her team. And efforts. I was not expecting such a great gathering. I was expecting कि more of a limited gathering होगी और एक कमरे में होगा. But thank you all for coming and just recognizing our efforts. Because जब this COVID शुरू हुआ, तो there was a sudden decrease in the number of passengers who were going. आ जा रहे थे दोनों में कमी आई थी. And Udaipur is primarily tourist destination है. So it was on us, it was on all the stakeholders
airport operators, we, the security providers, CISF, airlines, to build that trust once again कि लोग वापस एयरपोर्ट्स पे आएँ और उदयपुर का एज ए टूरिस्ट सेंटर भी एक्सपेंशन हो. सो हम अपनी एफर्ट्स इस में और कंटिन्यू करेंगे. एंड नंदिता जी इज़ वेरी मच ट्राइंग फॉर दिस एयरपोर्ट टू बिकम ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और जो बिजनेस अभी आप लोगों का दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे इंटरनेशनल पैसेंजर्स पहले आते हैं और वो जो उनकी कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो वहाँ पे जो खर्च हो जाती है, नंदिता जी इस टाइम इट्स बेस्ट कि वो सारे लोग सीधे उदयपुर में आए एंड आप लोगों को सीधा उसका फायदा मिले. थैंक यू वंस अगेन फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर एफर्ट्स. Attracted you few times and you are a very warm person. I can see all the people are appreciating you. You are such a warm person and you have definitely put in lot of efforts. Because I am sure, as we all said, that once beyond COVID, no sooner she is taken over, she has been really very proactive. She is open to the suggestions and she always accepts it. And we wish you all the very best for the future endeavors, and we all should be very happy that Udaipur Airport very soon will be an international airport. Thank you so very much. Thank you. Number one position, and yes, just adding to Atul sir's statements, there was a time after COVID that when the flight load was around 60-70 passengers, and we were feeling like even 90 passengers was a good load for us at that time. And with all the safety, security, all the updates, we managed to reach full flights. And now we feel if the load is of 80 or 70, we are going with the empty flights. So thank you, ma'am. Thank you for all the support, and we hope to continue this relationship longer with our, and also for international, as we say, sponsors. Thank you, sir. Thank you. I'm looking forward. I'll tell you, Udaipur Airport is really unique. It's more like a big airport, growing and handled very well. And the quality of clientele which we see, or the quality of people who travel to Udaipur Airport is quite unlike other airports. So we operate airports where there are masses who are traveling. But here you find the category which I always say across the places I go. The quality of clientele which you have in Udaipur is probably one of the finest. And the way it is maintained, it fully complements that. There are very few airports which complement with the quality of the clientele. So we have so many 5-star hotels which are giving the best. You would have probably one of the finest hotels in the country is Udaipur, right? But complementing the same, Udaipur is doing the similar work. They are also standing number one in India for its quality works. As far as our work is concerned, we are primarily in media and event business. So Udaipur we typically promote as a wedding airport of India. We target this way when we go to the market and we talk to the corporate houses across. It's a wedding airport of India, because since it's a wedding capital of India, Udaipur. So similarly, the airport is also conceived in that manner. So you have so much of opportunities. There's so much of flexibility at this airport, which is usually not there at other airports in a usual manner. Because being a compact airport, you can do hell number of things. Like it's more like a kind of a mini banqueting, we can say. You can have a flower decor, you can have red carpets, you can have rangoli, you can have small dance function outside the terminal building. Then you can have a small Chennai counter. Multiple ways you can pamper people who are coming here, which is quite unusual or something new to the airport industry. You would hardly come across this kind of elements. I think we should explore and share with the people this kind of an initiative which is available at Udaipur Airport. The idea is to pamper the people who are coming here. They should get that experience, once they enter. So recently we managed to get one of the very nice hospitality desks also. Earlier we used to do on a check-in counter. Nowadays you visit, we'll find a very, very beautiful hospitality desk which is there.
And now we are again coming up with a lot of digital outdoor. What you say in Delhi and Mumbai airport, you will see a lot of video walls and the digital media which is coming at the Udaipur airport. Again, a good thing to explore. Nevertheless, my principal idea is Udaipur airport complements the 5-star and the entire Udaipur standards, which is always number one all places. Thank you. With the travel associations and Chamber of Commerce help, and I will see more feathers to be added on this with the help of UCCI and Travels and Tourism Corporation in coming future also. And my real thank you and best of luck for everyone from congratulate to everyone and support from all sides. From CISF and from the whole airport family, I would like to have my deepest and all my warm congratulations to ma'am and the team for making Udaipur proud once again. We have been consistently rising from 3rd to 2nd to 1st. I don't know whether we have left any scope to further improve. And Mr. Kothari, I have been personally in touch with him, and he's a very nice guy, so whatever he said, I take it as a compliment. And ma'am is a very, talking about ma'am only, she is a very hardworking person, she is very proactive. I've always said it offline, online, that once she has joined this Udaipur Airport family, we have changed a whole lot of things, and we are proud to be associated with Udaipur Airport and the family. Thank you so much. And